Hi guys, I hope you're doing great. So आज का वीडियो ना I thought I'll share with you guys the prerequisites of while taking rituximab क्योंकि मैंने अभी ये complete किया है right. So I thought let me just share with all of you who are planning to take rituximab. So rituximab लेने से पहले राइट यू विल हैव टू डू फ्यू टेस्ट जो आपका डॉक्टर आपको बोलेंगे मैं तो इतना साल से ले रही हूँ कि मुझे पता था कि मुझे क्या क्या करना है बट आई रिकन्फर्म्ड इट विद डॉक्टर भाटिया व्हेन आई मेट हिम इन द सेमिनार जो अभी हुआ था राइट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सो ही वॉज ओके विद दैट सो आई वेंट अहेड एंड डिड इट सो उसके लिए मेनली रिक्वायर्ड है ब्लड टेस्ट में आपको कराना होता है विच ही चेक्स हमेशा मेरा रिलेटेड टू मी इज LFT KFT एंड CBC ये तीन ही ऑलवेज आस्क मी टू गेट इट डन एंड another important thing he asked would be the CD19 and CD20 markers. अब ये जो CD19 एंड 20 है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि ये अगर ज़ीरो आता है तो यूजुअली द डॉक्टर सेज अभी कीमो करने की ज़रूरत नहीं है सो दीज आर मेनली द मार्कर्स राइट आई रियली डोंट नो द साइंटिफिक टर्म्स या फिर इन डिटेल्स बट दैट इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड अब तक क्योंकि एक बार हुआ है मेरे साथ कि CD19-20 हमेशा एलिवेटेड नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स एज ज़ीरो राइट सो जब भी ज़ीरो होता है ना तो डॉक्टर मना कर देता है कि अभी नहीं करना है बाद में करेंगे राइट सो दे डिले इट एंड वेन एवर इट इज़ एलिवेटेड कि अब ये हंड्रेड्स में आ जाता है अगर 70-100 ऊपर आ जाता है तो देन यू ऑल्सो नो दैट ओके योर कीमो इज़ ड्यू तो वो यूजुअली वो दे देते हैं फिर ठीक है ना सो ये चीज़ है अब इसका कॉस्ट भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी LFT KFT तो दैट्स नॉर्मल दैट्स ओके राइट सो दैट यू कैन डू इट बट फॉर CD19 एंड CD20 अगर आप मेट्रोपोलिस से कराते हो तो एक का 2400 वॉज वॉट इट कॉस्टेड मी सो CD19 एंड CD20 कंबाइंड विल कॉस्ट यू 4800 सो आप मेट्रोपोलिस से ही कराओ क्योंकि मैंने इससे पहले आई यूज टू डू इट फ्रॉम SRL आई गेस SRL में मुझे दोनों का 6400 लगता था इन टोटल CD19 एंड CD20 का देन एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज इन गोवा राइट सो गोवा में मुझे डॉक्टर पारुल दुबे वॉज द न्यूरोलॉजिस्ट in Manipal Hospital who was treating me. So she suggested Metropolis se karao. So Metropolis was relatively cheaper than SRL and Metropolis is all over India. So मैं अभी नोएडा में होके भी मैंने Metropolis से ही कराया है last year भी and this year also. So the rate has not increased. It is still 2400. आपका घर में आके they will take the sample. Home visit का 100 rupees they will charge, right? So आई थिंक विथ एवरीथिंग 6000 के अंदर अंदर मेरा पूरा ब्लड टेस्ट हो गया था complete right so that is one thing that I have done and I could see that CD19-20 का जब report आया तो I could see that the numbers has been elevated it is no longer zero so I know that now it is due वो तो मुझे पहले से ही लग रहा था but the report also confirmed कि yes I have to take the chemo very soon now and after that one thing major thing which was pending is the MRI है ना brain का MRI so because my condition has been stable so doctor usually he asks me to do just the brain का plain MRI without contrast and without spine so वो भी मैंने करा लिया है वो I went to do that yesterday I did it from HOD which is House of Diagnostics I did not know about this House of Diagnostics before Dr. Divedi Dr. Samsher Divedi, the doctor who diagnosed me from Fortis, he had suggested that do it from HOD. Relatively, HOD is very much cheaper than those branded hospitals like Fortis or Max, right? Fortis में अगर आपको 16,000 MRI का लगता है तो HOD में आपको 8-9 हज़ार में हो जाएगा. So yesterday I went to do this MRI तो प्लेन MRI कराया था सिर्फ ब्रेन का and it costed me 3000 rupees 2999 yes and I opted for the CD भी चाहिए था मुझे फिल्म्स क्योंकि
when I go to AIMS, they ask me to submit the CD उनके reference के लिए. So I opted for CD also. So that costed me additional 500 rupees. So 3500 के अंदर अंदर ब्रेन का MRI with CD हो गया था, right? अगर आपको डिस्क नहीं चाहिए तो वो 3000 के अंदर अंदर आपका पूरा ब्रेन का MRI कंप्लीट हो जाएगा. So I got this so obviously because अब मुझे चाहिए था comparison report, right? So अब जब कल मैं गई तो HOD में फर्स्ट आई थॉट आई टेक एन अपॉइंटमेंट, बट दे सेड अपॉइंटमेंट नहीं होता है वहाँ पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है. So I said okay, so I went yesterday and while I was billing the waiting time, billing counter में they suggested it was 5 hours. I was like, oh my god, 5 hours, what will I do? उसके बाद थोड़ा टाइम बाद वो 4 hours हो गया. सो एंड देन द पर्सन वाज सेइंग आप चले जाओ, हम आपको आधा घंटा पहले फ़ोन करके बुला लेंगे. अब मैं यहाँ से गई थी नोएडा से HOD कारकाडोमा में, राइट. सो मैंने कहा कि मैं नोएडा से आई हूँ, आई कैन नॉट गो एनी वेयर, आई वेट, आई सिट. तो मैं वहीं पे बैठ गई. तो वहीं पे बैठने का ये फ़ायदा हुआ कि वो 4 घंटे मुझे वेट नहीं करना पड़ा. इनफैक्ट आई थिंक 2.5-3 घंटे वेट किया होगा. सो आई हैड रीच्ड बाय 10 o'clock, 2:30 तक मैं फ्री हो चुकी थी. और yesterday was difficult, I would say, because again I was not accompanied by anyone, right? ये सारी चीज़ों के लिए मैं अकेले ही कराती हूँ. There were people जहाँ पे एक पेशेंट के साथ 2 attendees आ रखे हैं, यहाँ पे एक भी नहीं है. I mean that's how it is, but then I'm fine with it. But yesterday जब मेरा टाइम टर्न आने वाला था ना, उससे पहले I was feeling very very weak. मुझे चक्कर आने लग गए थे, and I was very scared and worried. Just like if something happens inside the machine, सोच के. Then I had to calm myself down, thinking यार I've done it so many times and I've always done it alone. It is not something new and I am sure I will be able to manage. So I mean, when they took me inside the machine also, I was just praying continuously because I was scared. And surprisingly कल मशीन के अंदर भी इतना लंबा टाइम तक नहीं रखा था, because I have been inside that machine for almost 1 hour also, but it was just brain, so maybe that is the reason. बहुत लंबा टाइम तक उन्होंने मशीन के अंदर नहीं रखा. But when the procedure was completed, I was not able to stand on my own. I needed the helper to help me stand also. मतलब बहुत ज़्यादा वीक लग गया था. एंड ऑब्वियसली आई डिड नॉट ड्राइव लकीली. मैं टैक्सी करके गई थी. आई डिड उबर वाइल गोइंग एंड आई केम बैक ऑल्सो. सो 2:30 बजे तक ख़त्म हो गया था. एंड देन आई चेक विद देम कि रिपोर्ट कब मिलेगा. सो दे वर लाइक ये तो कल ही मिलेगा काइंड. एंड आई वाज टेलिंग देम कि आई हैव कम फ्रॉम नोएडा, सो आज ही मिलेगा अगर तो आई विल वेट, बिकॉज गोइंग टू कारकाडोमा एवरी डे इज़ अगेन अ टीडियस टास्क, राइट. सो दे वर लाइक अभी हमें पता नहीं है, आपको मैसेज आ जाएगा वंस द रिपोर्ट इज़ रेडी एंड देन यू कैन कम एंड कलेक्ट. सो आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन. आई केम बैक होम, आई हैड लंच एंड देन आई स्लेप्ट. ऑनेस्टली इतना मतलब कि सर मेरा फटा जा रहा था. आई वॉज फीलिंग सो लथार्जिक. आई स्लेप्ट इट आउट फॉर कपल ऑफ आवर्स. उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ. एंड देन वंस आई वोक अप आई कुड सी दैट ओके मैसेज आ रखा है एंड द रिपोर्ट इज़ रेडी. सो आई थॉट अब नोएडा आ चुकी हूँ, घर पे हूँ, मैं कारकाडोमा वापस से कैसे जाऊँ ना. इट्स नॉट पॉसिबल. रिपोर्ट वॉज नॉर्मल अगेन, लकीली, थैंकफुली. द comparison report showed that there are no new lesions, so the brain activity was fine. So ये MRI कराना इसीलिए ज़रूरी होता है, so that for your own mental satisfaction also, that there are no new lesions in your brain. ये सोच के या ये सुन के भी, ये रिपोर्ट देख के भी ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. दैट इज़ वाई आई डू दिस MRI at least once a year, just to know कि अंदर दिमाग के अंदर मतलब ब्रेन के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ फ्लेयर्स हुए हैं नहीं हुए हैं, और इज़ इट लाइक अंडर कंट्रोल. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि योर डिजीज़ इज़ अंडर कंट्रोल. सो येस्टरडेज रिपोर्ट मतलब जो ऑनलाइन तो मिल चुका है मुझे. With that I could see that the disease is under control hopefully, and I'm happy about that. So now I will go, maybe अब इतना दूर जाना ही पड़ेगा, right, to collect the films and the CD.
अगर वो नहीं लेना होता तो I could have skipped, but I've already paid for those CD also, right? So वो लेके आना ज़रूरी है. Hopefully I'll be able to drive today because I am doing pretty well, and that's what it is. So this is what I wanted to share with you. These are the things that you need to do आपको rituximab लेने से पहले, right? So procedure, I have already messaged Dr. Bhatia कि I have to go to meet him, right? वो जब बुलाएंगे एम्स तभी मैं जा पाऊंगी, वो प्रिस्क्राइब करके देंगे, only then मैं ले पाऊंगी. So the last step is pending now. So rituximab से पहले जो भी मुझे करना था वो मैं कर चुकी हूँ. Now only pending thing is कि Dr. Bhatia's reply when he'll would want to meet me, and then I'll meet him and get the chemo done. उसके बाद I will be sorted for another 1 year, and that is such a relief. I'm glad to see that my disease is under control, and I'm sure आप लोग भी satisfaction के साथ you can live. You have to do your normal all these procedures of MRIs and all in a very timely manner. So I hope this video helps you, and thank you for watching. Thank you. Bye bye.